अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीकली रिकैप। हर वीकली रिकैप के अंदर हम सिवाय स्टॉक्स के कोई बात नहीं करते, इल्ला इसके कोई कोई ऐसी खबर आ जाए जो अशर भाई हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हो। इस वीक के अंदर मेजर डेवलपमेंट्स हुई अशर भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। 2-3 चीज़ों के हवाले से, एक तो ये कि एस&पी जो है वो 5% वीक ओवर वीक डाउन रहा, और ना सिर्फ ये कि बल्कि ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी 4% जो है वो अ, ऊपर की तरफ गई हैं, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो भी काफ़ी राइज़ किया है, मतलब 23 से 27 की तरफ चला गया है, जो कि एक बड़ी मेजर जो है ना डेवलपमेंट है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स का ऊपर जाना मार्केट्स के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं होती। तो अब आप इसको बताएँ कि अब ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, किस तरह हम चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं, और किस तरह अगले महीने हम मिलियनेयर बन सकते हैं? मिलियनेयर बन जाए यार, वो तो फिर आपको डबल शाह की कोई स्कीम निकालनी पड़ेगी मिलियनेयर बनने के लिए। उसके अलावा तो किसी तरह आप बिलियन यहाँ मेरे ज़रिए तो नहीं बनने वाले। या फिर मगर तो कोशिश इसका करूँगा। मतलब है, मतलब बंद आधे कर दें मेरे व्यूवर्स ख्याल तो से हमारे, मेरा हाँ, वो चले गए होंगे आधे चले गए व्यूवर्स तो होंगे हमारे। हाँ। ये बात आखिर में करनी है, ये वाली शुरू में ये चलें, बोलना है हम मिलियनेयर बनाएँगे। चलें, 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 चलें। यार मिलियनेयर बनाएँगे हम क्या कहते हैं अब किस करेंसी में मैं बता नहीं रहा। ठीक है। So this week, obviously S&P posted around 4.8% decline for the 5-day session ending 16th of September. One of the worst weekly performances since mid June. अब तो ऐसा लगता है कि हर हफ्ता एक worst होता चला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब मार्केट पंडित्स ने कहा है कि वो मिड जून से वर्स्ट, तो मतलब जून को गुजरे हुए ज्यादा अर्सा नहीं हुआ है। तो इस वक्त हम we're actually biting our nails down to the last bit in trying to figure this market out. Personally, I feel this was kind of in the making के CPI के numbers आने वाले थे, and जो consumer price index data है, inflation data है, वो आने वाला था, and it was expected के market यहाँ पर तो दूसरी तरफ जाएगी, यहाँ पर तो it'll take a beating, and exactly that's what happened. CPI के numbers 8.3% आए अगस्त के लिए, inflation आई 8.3%. अच्छा, for those who are trying to understand कि CPI क्या है, हम और PCE क्या है, जो कि अभी अगले हफ्तों में आएगा, प्रिंट मतलब उसका भी नंबर आएगा। CPI कोर क्या है, PCE कोर क्या है, they can head over to our primer जो हमने इस पे लगाया। I think we can plug it in right now, and उसको वो देखकर at least get a sense of what inflation is, what are the different kinds of inflation that the US measures. Why is it important to the U.S. Federal Reserve? Which benchmark is specifically important to the U.S. Federal Reserve? And then how does this all link up with the markets? Um, अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट ये अगस्त का नंबर ये था कि 8.3% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज था इन्फ्लेशन में. दिस वाज 0.1% above month over month July, and 8.1% above. So basically, if the consensus was 8.1% and CPI came in, inflation came in above consensus as well. तो पिछले महीने से भी ज्यादा ऊपर आई है, और consensus जो estimate forecast थी उससे भी ऊपर आई है. So obviously the market was expecting a decline versus July. आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि जून से बेसिकली जून में इन्फ्लेशन पीक की है, and then it came down to 8.2%, and then basically it's sort of stuck around that level for August, and market expect kar rahi thi कि there would be a meaningful decline, at least 8.1%, वरना तो maybe even lower. तो ये नहीं हुआ unfortunately, and core CPI actually came in at, again, core CPI, which strips out volatility for food and energy prices. It rose more than 6.3% from 5.9% in July, which is actually the reason why the markets took a very huge beating. Again, as I said, important है ये सारी चीजें understand करना, which is why I would recommend everyone head over to our primer video.
on this topic to understand कि core CPI और headline CPI में फर्क क्या है, core PCE और headline PCE में फर्क क्या है. तो as I said, Abdullah, CPI numbers number बहुत ही यानी core CPI का जो number था, which is taking out the food and energy prices, was quite high, and I think that was the reason why people sort of panicked. Investors panicked, and basically इसकी implication ये है कि markets ने understand किया है कि अगले हफ्ते September 21st को जब US Federal Reserve will meet to actually fix the rates uh, for the future, the benchmark federal funds rate, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगेन 75 बेसिस पॉइंट्स प्लस हाइक होगी, 75 to 100 बेसिस पॉइंट्स. बीच में जब इन्फ्लेशन नीचे आई थी तो लोगों ने कहा था कि यार अब यूएस फेडरल रिजर्व जरा हौले हौले अपना हाथ हल्का रखेगी और रिलैक्स करेगी. But as we can clearly see, okay, this is not going to be the case. I think the Fed is going to be taking a hawkish stance and basically increasing the federal funds rate or the benchmark rate, yeah, interest rate, जिसको भी आप जो भी आप कहना चाहें इसको, right? In simple terms, all of this is bad news overall for the market in the short run. Obviously, there's always the long run view, and then there's the short run view. But for now, अभी short to medium term तो यही नजर आ रहा है कि inflation is here to stay. Very clearly, this is a signal that inflation is here to stay. And ये सिर्फ एक temporary effect नहीं है. And as a result of that, obviously, U.S. Federal Reserve will make sure that they're trying to increase the interest rate in order to actually bring this inflation number down. अच्छा भाई, जब आप ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज हेयर टू स्टे, तो डेफिनेटली हर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि भाई फिर कितना अरसा, मतलब 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, या फिर दूसरा ये कह लें कि एक दूसरा सवाल ये आता है कि चलें आप टाइम फ्रेम नहीं बता सकते, जो कि सही समझ में आने वाली बात है. तो फिर आप क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो मार्केट के अंदर होंगी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स, वो होंगी तो फिर शायद इन्फ्लेशन रेट जो है वो अपने नीचे आना शुरू कर दे और स्टॉक मार्केट थोड़ी-सी स्टेबल होना शुरू हो जाए. क्या ऐसे इंडिकेटर्स क्या हैं? इन द Uh, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? so I think a couple of things, as you can kind of see, and I'm trying to share this here on my screen as well. कि देखें, CPI is based on, सबसे पहले तो समझ लें CPI is based on what? CPI is based on food, energy and all items less food and energy. ठीक है ना? तो ये नंबर पे मैं फोकस करता हूँ, because ये दो नंबर्स पे यूएस फेडरल रिजर्व इतना ज्यादा फोकस नहीं करती, ऑल्दो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, राइट? तो हर किसी पे मैं एक एक नजर डालता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट, द कोर सीपीआई. कोर सीपीआई में अंदर जाते हैं, हमें दो नजर आती हैं, कमोडिटीज लेस फूड एंड एनर्जी कमोडिटीज, सर्विसेज लेस एनर्जी सर्विसेज, राइट? तो कमोडिटीज एंड सर्विसेज, कमोडिटीज के अंदर जाएं तो आप देखते हैं कि अपैरल है, न्यू व्हीकल्स हैं, जो नई व्हीकल्स की प्रोडक्शन है, यूज कार्स हैं, मेडिकल केयर है, मेडिकल कमोडिटीज हैं, अल्कोहल बेवरेजेस हैं जो ये लोग ट्रैक करते हैं, एंड देन टोबैको एंड स्मोकिंग प्रोडक्ट्स हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि सारी एवरीथिंग हैज प्रीटी मच गॉन अप, राइट? एंड अगर आप सोचें, मतलब अगर आप 2 मिनट के लिए अब्दुल्ला देखें, मतलब ऑब्वियसली as Muslims, maybe alcohol and definitely alcohol and tobacco are not part of our consumption, but obviously it's a large part of what the average non-Muslim would consume on a daily basis or on a weekly basis. But अगर आप बाकी चीजें देख लें, मैं आपसे पूछता हूँ कि जिंदगी में रहने, मतलब जिंदा रहने के लिए खाना और आपको अपनी you want to have gas in your car and food in your mouth, but you also want to have apparel, कपड़े भी पहनने, राइट? सही गाड़ी बात. भी चलानी है, और मेडिकल केयर भी आपको चाहिए, राइट? तो ये बेसिक नेसेसिटीज हैं जिन पे आपने स्पेंड करना है. अब ये क्यों ऊपर जा रही हैं, एंड बेसिकली इन सबका लिंक क्या है? देखिए, एक तो बड़ा लिंक ये है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, यानी जैसे कहते हैं ना, ऑयल इटसेल्फ, मैंने पहले भी बताया था कि ऑयल इटसेल्फ
is just oil. You're just measuring gasoline or oil, one of the things that you put in your car or you actually produce on the upstream. But ये समझने की कोशिश करें कि अगर अपैरल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, मतलब कपड़ों की प्राइसेस, तो वो इसलिए कि पॉलिएस्टर की प्राइसेस ऊपर जा रही होंगी फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। पॉलिएस्टर की प्राइसेस क्यों ऊपर जाती हैं? चूंकि वो अल्टीमेटली डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट है ऑफ ऑयल। तो ऑयल एक तो वो है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ना, वो ऑयल जो कि प्रोड्यूस होता है, और जेट फ्यूल, मतलब फॉर एग्जांपल वो जेट फ्यूल जाता है जेट्स में, एरोप्लेन्स में, और फिर गैसोलीन जाती है आपके पेट्रोल की सूरत में, गाड़ी में। बट देन देयर इज द कंपोनेंट व्हिच इज डाउनस्ट्रीम, जो उसके 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 मजीद उसको जब आप क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, मजीद तोड़ते हैं उन कंपाउंड्स को, तो वो और जो चीजें निकल कर आती हैं, वो वो चीजें हैं जिससे आपकी गाड़ी बनती है, राइट। सो यू हैव polypropylene, which is part of the vehicles. You have polyester, which is part of the apparel goods. पेंट तक जो है ना, पेंट, डाइज, ये सारी पेट्रोल से पेट्रोल नहीं, मतलब क्रूड ऑयल से निकलती है, क्रूड ऑयल। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब ऑयल ऊपर जा गया है ना, ये रशिया यूक्रेन की वजह से, एक तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत ज्यादा, एंड देन जनरली एक अंडर सप्लाई जो क्रिएट हुई है, तो उसकी वजह से, जो हम पहले भी मेरे ख्याल से डिस्कस कर चुके हैं, एंड वी कैन प्लग इन अ प्राइमर फॉर दिस एज वेल, जहां पे हमने ऑयल प्राइसेस और उनके लिंकेजेस विद द मार्केट डिस्कस किए थे, व्हाई इज ऑयल इंपॉर्टेंट फॉर इन्फ्लेशन, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सब कुछ ना, दिस ऑल फ्लोज डाउन स्टेयर्स। डज दैट सॉर्ट ऑफ मेक सेंस? हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑयल प्राइसेज़ के ऊपर ये काफ़ी चीज़ें जो है वो हेवीली डिपेंडेंट है ऑयल प्राइसेज़ पे। तो जब तक ऑयल प्राइसेज़ जो हैं वो नीचे नहीं आती मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इन्फ्लेशन अभी ऊपर की तरफ एग्जैक्टली। या ये कह सकते हैं कि जिस जिस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर ही रहेगी। एग्जैक्टली, फूड एक और सब कमोडिटी है, जो कि इन्फ्लेशनरी है, और आप देख सकते हैं कि फूड सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है। ये फूड अवे फ्रॉम होम है, फूड एट होम है। अब फूड एट होम एक ऐसी चीज है, अगर मैं वापस जाऊं फूड के अंदर मैं गया हूं, और फूड एट होम एक ऐसी चीज है जो आपकी बड़ी बेसिक चीजें हैं। आप देखें, सीरियल एंड बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट्स, पोल्ट्री, फिश एंड एग्स हैं, डेयरी एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स हैं, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं। ये सारी बेसिक चीजें हैं, और ये सब ऊपर इसलिए चली गई हैं क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। ग्लोबल साउथ में फ्लडिंग्स बहुत ज्यादा आई हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स की यील्ड हैव गॉन डाउन ट्रेमेंडसली, जो कि मतलब उड़ी गए, पूरी पूरी खेत, मतलब फसलें उड़ चुकी हैं फ्रॉम एग्जिस्टेंस। एज वेल एज द फैक्ट कि रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूक्रेन से जो ग्रेन्स आते थे, स्पेशली फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स जो निकल कर आते थे। एक और चीज समझने की जरूरत है कि जो ग्रेन जो भी आप उगाते हैं, इस पे आप फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो उगती है, that the yield is increased or amplified for the same hectare land by applying fertilizers. तो जब अब यूक्रेन से और इधर उधर से फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन कम हो गई, और गैस प्राइसेस की वजह से, गैस जो शटडाउन हुई है उसकी वजह से, पूरी पूरी यूरोपियन फर्टिलाइजर कैपेसिटी नीचे चली गई। 70% ऑफ द यूरोपियन fertilizer capacity is out. The ability for Europe to actually produce fertilizers, यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट, ये बेसिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जो खाद में डालते हैं, टू एक्चुअली इंक्रीज द यील्ड पर हेक्टेयर यील्ड एंड टू प्रोड्यूस दीज क्रॉप्स, तो वही उड़ गई है। तो अब उसकी वजह से सही। उनकी प्राइस ऊपर चली गई हैं। उनकी प्राइसेस ऊपर गई तो सप्लाई चेन में क्या आया? अगला फूड, जो खाना एक्चुअल है, ठीक है ना, चूंकि वो सप्लाई में कम हो गया। तो इन वजूहत की बिना पे ये सारी चीजें फूड भी ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें समझने की हैं कि दो तीन चीजें एक साथ आ गई हैं, बट a lot of it is to do with ऑयल प्राइसेस। जब ऑयल प्राइसेस ऊपर होंगी, और खास तौर पे यूक्रेन का जो इशू है, जब ऑयल प्राइसेस ऊपर होंगी तो ऑब्वियसली आपकी सारी चीजें जो नीचे की तरफ आ रही है, यानी कपड़ा, पेंट, cars, you name anything, because everything requires diesel, gasoline, some sort of energy input to run the factories. And then even if you don't run the factories, आपको जो पेंट है, आपका जो डाइज है, आपके जो कपड़े का जो धागा है, that is also somehow linked to the food chain, which is oil based, ठीक है ना। And then हुँ, फूड वाली बात आपको समझा दी कि खाना क्यों महंगा हो गया एसेंशियली ग्लोबली, प्लस ग्लोबल साउथ में एक तो फ्लड्स आए, और फिर यूक्रेन की वजह से गैस अगेन, गैस चूंकि व्हिच इज अगेन पार्ट ऑफ द पेट्रोल क्रूड ऑयल, जब एक्सट्रैक्ट होती है तो गैस भी निकलती है। दैट गैस इज बेसिकली नाउ शट ऑफ फ्रॉम रशिया ओवर टू यूरोप, उसकी वजह से यूरोपियन गैस प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। एंड देन यूरोप इज अ ह्यूज सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एसेंशियली
फर्टिलाइजर प्राइसेस ऊपर चली गई, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस ऊपर चली गई। हम्म, तो सही, यानी टाइम लिंक्ड है ये, सिर्फ ऐसा नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ ऑयल से है, लेकिन ऑयल के अलावा और बहुत सारी चीजें जिनके साथ ये लिंक्ड है। और वो जब वो बाकी सारी एग्जैक्टली। चीजें ऊपर, भले ही कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, लेकिन अगर यानी ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये जिस तरह फर्टिलाइजर्स वगैरह आप बता रही हैं, सारी चीजें उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो वो अल्टीमेटली स्टॉक कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, वो इसके अंदर इसके इफेक्ट में जरूर आएगी। Of course, this is everyone's going to face this, and there's nothing you can do about it. Which is why I think it's important to just keep this in perspective every time you're actually looking at the markets in the short to medium term. Long term, I've always felt that you're really betting on the economy of any country. You're betting. अगर आप long term में US में invest करते हैं, you're basically assuming that US is going to be around for the next 10, 20, 30 years. And these companies, ultimately, obviously, these companies are going to continue to be leaders of their markets, respective markets, global markets. Apple ho gaya, Tesla ho gaya, all of their itna investors uske piche kyun bhag rahe hain, right? Because they believe that the next 10 years, 20 years belongs to these companies and stocks. So in the short to medium term, obviously everyone's going to be impacted, but in the long, because of these variables, or let's say noise, but in the long run, at the end of the day, आपको यही समझना पड़ेगा कि भाई एक economy long term में क्या करेगी? Will it continue to succeed as an economy? And will these companies that are part of this ecosystem, the global ecosystem, उसमें वो continue करेंगी survive करना? So this is maybe a good way to look at it. Um, the other thing was that FedEx was actually down 24% for the week. Management, FedEx results आए, and basically मैनेजमेंट ने ये बताया है, या कहा है in their commentary that they are looking at a lot of softening in demand. Basically आपको पता है कि आपकी हर चीज FedEx के थ्रू आती है, right? So basically FedEx आपका ग्लोबल शिपमेंट से लेकर, मतलब जितना भी पार्सल्स है, हर चीज वो डिलीवर करता है, right? So it's part of the services industry, is part of, मतलब वो बैंकिंग को भी इम्पैक्ट करती है, यानी उसकी उसकी वो परफॉर्मेंस उसकी जो है वो ट्रैक करती है फ्रॉम बैंकिंग, वो ट्रैक करती है फ्रॉम food, वो ट्रैक करती है from any commodities. वो basically FedEx is kind of this big player in the logistics business, right? Um, स्पेशली इन and यूएस, राइट? especially in US and globally. I mean, FedEx is there globally as a global सही। logistic player. FedEx is not just a company जहाँ पे आप जाकर अपनी DHL करवाते हैं, DHL जैसे हमने किया हाँ, उनके मतलब और था। कार्गो वगैरह सर्विसेज और इस तरह के हैवी एग्जैक्टली, मतलब ट्रांसपोर्ट। कपड़ा ही मंगवाने तो आप फेडेक्स से मंगवा सकते हैं, राइट? सो द थिंग इज ऑब्वियसली दैट मींस कि अगर यहाँ पे स्लो, ये दे आर एक्सपीरियंसिंग द स्लो डाउन, इसका मतलब पीछे जितनी भी इंडस्ट्री है ना, वो भी स्लो डाउन एक्सपीरियंस कर रही है। इसलिए भी मार्केट बड़ा, दे वर वेरी स्पूक्ड आउट बाय दीस कमेंट्स, बिकॉज़ FedEx is not just one stock कि एक कंपनी उसने कह दिया यार, एप्पल इज नॉट जस्ट वन स्टॉक कि उसने कह दिया यार मेरे आईफोन की सेल्स डाउन है यार, मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही। Bhai, these have implications, because at the end of the day, what does Apple's iPhones being sold uh, at a slower pace mean? इसका मतलब ये है, या कम सेल हो रहे हैं जितना होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं। अगर लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ किसी ना किसी तरह का स्लो डाउन आ रहा है। ठीक ठीक है ना? मतलब अगर आपकी पॉपुलेशन ओवरऑल ग्लोबली ग्रो कर रही है, मगर एट द सेम टाइम उतना आईफोन नहीं बिक पा रहे, एक मिसाल के तौर पे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिमांड डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये डिमांड डिस्ट्रक्शन का जो अब थ्योरी है ना, वो रिसेशन में बड़ी इट प्लेज राइट इनटू रिसेशन, एंड एवरीवन इज फियरिंग दीस रिसेशनरी फियर्स, बिकॉज़ फेडेक्स के सीईओ ने तो कह दिया कि भाई ये तो मतलब कह रहे हैं ना कि इट सीज ए सिग्निफिकेंटली वर्सनिंग ग्लोबल इकोनॉमी। तो वो तो ये कह रहा है कि this is bad. What we're looking at is a bad situation, and it's not just for our stock, global economies. Exactly something that you just pointed out in terms of कि एक stock नहीं होता, बल्कि it gets impacted by all these movements that are happening in the market. सही सही, ठीक है। So, I mean, obviously there were other news as well. Ethereum ka merge hua hai, ultimately it moved from a proof of work model to proof of stakes model, to actually this would drastically reduce the energy inputs or energy requirements that are जो Bitcoin mining hoti hai ya jo cryptocurrency mining hoti hai, that actually would make it more easier to mine these new cryptocurrencies, or the newer units of these cryptocurrencies, especially Ethereum, एक बड़ा obviously नाम है Bitcoin के अलावा,
in the cryptocurrency world, both in terms of its investment and application. So you can read more about proof of stake versus proof of work, and that's very interesting to look at. But overall जो मैसेज है वो यही है कि जो कंपनीज, जो माइनर्स जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी बड़ी मतलब माइनर्स मतलब अपने एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ था, माइनिंग स्टॉक्स थे, मतलब क्रिप्टो माइनिंग स्टॉक्स, एक तो वो है गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स, एक क्रिप्टो माइनिंग स्टॉक्स भी हैं, राइट? And they basically in the long run will need to change their business model, because अगर तो प्रूफ ऑफ वर्क की तरफ चला जाता है इथेरियम जैसी बड़ी करेंसी, क्या कहते हैं, बिटकॉइन ने इस हवाले से कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टेप उठाया है, because Bitcoin is basically decentralized and the rules have been set from the start. I don't think कि Bitcoin Ethereum के फाउंडर ने ये किया है, right? Ethereum's अच्छा founder अच्छा actually रवि, took यहाँ पे एक चीज क्लियर करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब क्या है? जब आप प्रूफ ऑफ वर्क की बात करते हैं तो इसका मतलब है क्या? प्रूफ ऑफ यार काफी टेक्निकल चीजें हैं ये सारी, मगर प्रूफ ऑफ वर्क बेसिकली इन शॉर्ट ये है कि आपको मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी होती थी और उसके लिए आपके पास एक माइनिंग पावर होनी चाहिए थी, राइट? बेसिकली आपके पास जितनी माइनिंग कैपेसिटी होगी, राइट, जितनी आपके पास बड़े सर्वर्स होंगे टू एक्चुअली मेक दोज कंप्यूटेशंस, राइट, और उतनी आसान था कि आप वो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते थे और उस मैथमेटिकल इक्वेशन के बदले आपको इथेरियम एक मिलता था, एक सर्टेन पोर्शन ऑफ इथेरियम, राइट? जितनी आप मैथमेटिकल इक्वेशन, वो बेसिकली सारे बेसिकली वो एक इक्वेशन थी जिसको सॉल्व करती थी और मल्टीपल लोग उसको सॉल्व करते थे, जितनी जो जल्दी जितने लोग सॉल्व कर लेते थे उनको वो एक बिट यानी बिटकॉइन नहीं, बिटकॉइन इसी तरह काम करता है और इथेरियम भी इसी तरह काम करता था। अब ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक में ये है कि जिसके पास जितना इथेरियम है वो उसको स्टेक पे लगाएगा टू एक्चुअली produce more Ethereum. माइन। ठीक है ना? To mine more Ethereum, exactly. To mine more Ethereum, right? To produce more Ethereum, to mine more Ethereum. पहले तो माइनिंग कैपेसिटी आपको होना चाहिए थी, आपको सर्वर्स होने चाहिए थे, आपके पास एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टू माइन दोस, to push those servers into producing, running these equations होना चाहिए था। बट देन अब ये है कि क्या कहते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक में ये है कि जिसके पास जितना है, ठीक है ना, वो बिड करेगा टू एक्चुअली माइन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस गेट मोर। इस पे काफी सारे और भी इश्यूज हैं, टेक्निकल बहुत सारी चीजें हैं, मोनोपोली का भी एक डर है और बहुत सारी और चीजें हैं, बट इसमें आई गेस दिस माइट नॉट बी द राइट टाइम। आई थिंक मे बी यू कैन पिक इट अप फॉर सम डे, अदर डे। अगर तो कोई इस सवाल से रिक्वेस्ट भेजता तो आई बी मोर देन हैप्पी टू एक्चुअली गो इनटू दिस डिटेल। बिल्कुल, अगर आपका व्यूअर्स में से किसी का सवाल हो, कुछ जो पूछना चाहते हो क्रिप्टो के हवाले से, स्टॉक्स के हवाले से पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसको अपने नेक्स्ट रिकैप के अंदर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो ऑल इन ऑल मैं क्विकली अब मार्केट की तरफ आ जाता हूँ। सो मैं हमेशा आई लाइक टू स्टार्ट विद द बिग पिक्चर व्हिच इज द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में मैंने चैनल जो क्रिएट किया हुआ है, एज यू कैन सी कि चैनल रिस्पेक्ट हो रहा है, 2008 से रिस्पेक्ट हो रहा है चैनल, एंड बेसिकली वी कैन सी कि ये चैनल के मिड पॉइंट पे अब मंथली में आ चुकी है। सो द चैनल इज स्टिल इन चेक। चैनल को ब्रेक किया था बैक इन 2021, but then it quickly made its way back, and then basically अब हम चैनल के मिड पॉइंट पे खड़े हुए, which is where we stand. Overall I think channel check तो वही है, जो एक चीज, now let's move into the weekly chart में मैं ये यूजुअली देख रहा होता हूँ अच्छा कि अच्छा भाई, छोटे, यहाँ पर एक चीज़ अगर हम ये कहें कि ऑब्वियसली रिलेटिव टर्म्स के अंदर तो मार्केट नीचे ही है, लेकिन अगर हम ये कहें कि एक मंथली जो एक ट्रेंड चल रहा था उसको उसको अगर देखा जाए तो मार्केट एक सही जगह पर है। अगर एक um, लार्ज पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर देखी the जाए। bigger picture is कि market is still in check in terms of the valuation, in terms of technically market जो पिछले आप समझ लें जिस चीज को respect कर रही थी for a very lengthy period of time, वो अभी भी in check है। Even RSI मैं usually check, अभी मैं देख रहा था, it's still in check in terms of what I look at, and maybe we can pull up, people can go and watch our primer on on RSI to actually understand कि मैं किस तरह देखता हूँ RSI को। But overall, क्या कहते हैं, things are in check. I think things are pretty much in check. There's nothing to be crazily worried about right now. मेरे लिए तो अभी there's nothing that is major in terms of what's going on. 5 year जो medium term trend है,
वो अगेन डाउन ट्रेंड, जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है मार्केट सिंस पीकिंग इन जनवरी 2022. एंड देन बेसिकली अब ये मिड पॉइंट का जो मिड पॉइंट चैनल है वो अराउंड 380 है. देखते हैं कि इसको वो रिस्पेक्ट कर सकती है कि नहीं करती, और इट ब्रेक्स डाउन थ्रू दिस मिड पॉइंट चैनल. 1 year देख लेते हैं, which is more short term. Again, the channel check, जो long term, it's in place. मीडियम टर्म में जो डाउन ट्रेंड है दैट्स स्टिल इन प्लेस. जो शॉर्ट टर्म में इस वक्त जो मैंने की लेवल आइडेंटिफाई किया हुआ था वो 380 का है. एंड बेसिकली मार्केट ने कोशिश की थी पिछले कुछ दिनों में कि 405, जो मैंने बताया था कि मेरे साल के एंड का टारगेट है तकरीबन, राइट, दिसंबर तक का टारगेट है, वो राइट हियर. सो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये तकरीबन तकरीबन रिस्पेक्ट होगा. और ये कोशिश की इसने वापस आने की, बट देन इट हैज क्विकली मूव डाउन अगेन बिकॉज ऑफ ऑल द न्यूज़ दैट यू सीन. अगर ये सीपीआई का नंबर सही आ जाता और थिंग्स वुड हैव बीन ऑलराइट, आई थिंक दिस वुड हैव बीन ब्लास्टेड थ्रू द अपर एंड एंड ट्राई टू touch the resistance around 424, 418, 424. But obviously things didn't happen go the way they intended upon going. um, uh, तो क्या कहते हैं, 380 को अब ये हो सकता है टेस्ट करे. Seems like it might be testing that area around 380, 400 ish. Market वैसे तो close down obviously किया around 386, but let's see what happens. So 380 is a key level that I'm looking at. uh, channel का ये dotted lines है, these are channel midpoints. Channel का midpoint है around 380 as well. So that's the area that I'm looking at right now, for the year end at least, कि ये 380 and 405 के बीच में रहती है. वैसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 405 के आसपास क्लोज होगी. uh, Another thing that I want to look at is obviously volume. मार्केट जब नीचे उतरी है तो अच्छा खासे वॉल्यूम पे उतरी है. बट अच्छी बात ये है कि मार्केट ने रिकवर भी काफी किया है जब ये क्लोजिंग सेशन आया है. यानी इट वाज स्टिल डाउन, बट ये कि किसी हद तक बाइंग फिर भी हुई है, because it opened a gap down, but then ये ultimately थोड़ी बहुत रिकवरी की तरफ गई थी. Still overall weak. Medium term trend is still in downtrend. Long term trend is still there in an uptrend. हम उसको, as I said, long term trend is still an uptrend for people who are long term investors. Medium term trend, medium to short term, I think is still in a downtrend. But the good thing is it's not as bad as I'm feeling. Agar recession aata hai, if there's something, that it will test the lower end of this channel, which is probably 300 points ish from the current 385. So obviously that's not going to be pleasant. But so far, as I said, long term healthy, medium term neutral, and short term it's still downtrend. I want to actually look at Apple. हमने Apple पहले भी discuss किया था. Let's try to apply this on a stock that we actually know. Apple, we discussed this. For those who actually don't know about Apple, in terms of how we looked at Apple, वो हमारे primer पे जाकर देख सकते हैं. And I think Abdullah can plug this on the channel as well, and everyone can have a look at it. Uh, so Apple, ये मैंने एक long term trend बनाया है, which has been being respected since 2000 से ये respect हो रहा है channel तकरीबन. And right now the channel check is still in place. It's at the midpoint of the channel. So overall, still in an healthy uptrend, as far as I can see. 5 year medium term पे आते हैं. कुछ levels मैंने draw किए हैं. Maybe we'll talk about how to draw these levels. But ये मैंने कुछ areas of resistance and support draw की हुई हैं. रेंज बाउंड लग रही है पिछले, यानी तकरीबन जब से इसने 130 तोड़ा था, ये रेंज बाउंड, ये ऊपर जाकर 180 पे, एंड देन इट्स बीन रेंज बाउंड एवर सिंस. I mean, so far it seems like the channel check is still in place. It's still range bound. इसने टेस्ट किया है, इसने basically 151 का area test किया है. Let's see if the market bounces back next week. I think Apple would be able to lead that market obviously by bouncing back at around the 150. अगर 150 break करती है तो obviously we're looking at the 130 level. Short term देख लेते हैं. Short term में अगर आप देखें तो 1 year chart ले लेते हैं. 1 year chart में, as I said, if it comes down 130, I want to quickly do a volume check to look at what sort of volume we're looking at. So
मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि ये इस चैनल के इस सपोर्ट के ऊपर ही आया है, तो चांसेस आर दैट इट विल फाइंड सम सपोर्ट this at the 150 close. The 150 के close पे I think ये supports लेगी, because as you can see a lot of the volume came in on the upper end and not on the lower end of the क्या कहते हैं support resistance channel जो मैंने draw किया, which is around the 130 to 150 level. So so I'm looking at probably some recovery next week from the bad blood that has been drawn. चूंकि नीचे वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, अगर नीचे जाती है तो बहुत तेजी से जाएगी and then it'll come down to 130. Could be an opportunity here, but still I think it's a good opportunity to add to the stock if you believe in the long term thesis of the stock. Um, or let's look at the 3 month on the hourly. Um, so am I at three? No, I'm not at the 3 month. So let's look at the hourly 3 month. Uh, hourly 3 month का जो बेसिकली वॉल्यूम मोस्टली वॉल्यूम आया 155 के आसपास आया है. इट ब्रोक दैट, आपने देखा कि यहाँ पे इसने रेजिस्ट करने की कोशिश की है, ट्राई टू बाउंस बैक फ्रॉम द 155, but then it broke this 155 once the mark towards the close of the market on 16th of September. So all in all I think यहाँ पे भी मुझे वही सिमिलर पिक्चर नजर आ रही है कि अच्छा खासा जो वॉल्यूम है वो ऊपर की तरफ ही आया है, above the 150, or below the 150 maybe there is some volume around 145 146. Maybe it kind of teases that level 145 146, but then I expect again jo it kind of confirms the the daily chart, um, is that कि volume ऊपर की तरफ ही आया, and I think it will pull back towards the back towards basically the resistance, which I've identified before as uh, what is this? Which I've identified before as 180ish. So 150 to 180 में ही रुकने वाली है. Again, all of these are short-term trends. If you still believe in the long term, I still say the channel check is still in place and things are looking good, unless until obviously Apple decides to go bust tomorrow, which I don't expect things to happen. तो अशर, हम एप्पल की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर एक न्यूज़ जो लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा पॉप कर रही थी, वो ये थी कि एप्पल जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट शॉर्टेड स्टॉक. सो 18 बिलियन आउट ऑफ द 2.49 ट्रिलियन इज शॉर्टेड राइट नाउ. सो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या ये राय सही पैरामीटर है किसी स्टॉक प्राइस को वैल्यूएट करने का, या मतलब दिस डजंट मीन एनीथिंग? I mean, it could mean something. अगर short typically short percentage increase की भी होती है, तो usually होता ये है कि people are expecting things to actually go to the downside. But then ये याद रखिए कि जितना market जितनी ज़्यादा short हुई होगी, उतना chances ये भी है कि जब short covering होगी ना, तो फिर उस पे ये बाउंस भी करेगी. So it could be that you're looking at a bottom of the stock, but then it moves ahead from मतलब ऊपर from there, because as the options expire, direct short positions uh, as people close these positions. So when they close the positions, they will have to buy back the stock. Once they buy back the stock, the things will go back. Things will not go back, but एक recovery period आएगा. So it's not directly an indication of what's going on, but of course, yes, it makes a lot of जैसे कहते हैं ना sense कि एक stock जिसपे मंदी का ध्यान है, people actually have a bearish view on the stock, they've shorted the stock, obviously is not a good indicator. But I'm not exactly sure what do you mean by most shorted, because the way I look at most shorted, and this is my favorite website, roic.ai. You can see the short on there. The short percentage of float is actually 0.7%, right? Of the float, which is nothing. आप मुझे कोई meme stock बताएं, कोई मतलब let's say AMC, GME. GME देख लेते हैं. AMC is 20% short of the float. ठीक है ना? GME देख लेते हैं. GME क्यों नहीं खुल रहा? So GameStop, yeah. 19% of the float has been shorted. Any other stock? ये Blackbird, huh?
बेड बियॉन्ड, वो क्या नाम था उसका? BY 108% of the float has been shorted. I mean, look at something even Tesla देख लेते हैं. असल में लोग जो है ना एप्पल को टेस्ला से ही कंपेयर कर रहे हैं. 2.4% of this has been shorted. So Apple ka short is nothing compared to what the percentage of the टेस्ला. float obviously uh, is nothing compared to even Tesla. 0.7% versus 2.4% in Tesla. So obviously there's no comparison whatsoever in terms of the most short items. Obviously hum typically equity put call ratio dekhte hain. I don't know if I can pull this up. NYSE equity put call ratio. So maybe this shows up. Let's see. So when is this? Yeah. So ये आप देख सकते हैं कि we typically look at I typically look at equity put call ratios to actually look at के put call put versus call, which is short versus long options market में percentage क्या चल रही है. ये आप देखते हैं कि 2020 में put call ratio ने peak मारा था 1.28 का, right? Which means के bearish sentiment बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तो it's a way to track bearish sentiment on the overall market. ये New York Stock Exchange के लिए put call ratio, but I think you can track this for other stocks as well. So I mean, it could give you a sense of what's going on. Like a short ratio, a certain 0.7 percentage से Apple का 1.4 हो गया, right? So that obviously then that makes a lot of sense, right, from what you're saying. But even then, it's 0.7% of the float. So I wouldn't look at it that way, and I would obviously compare this with other stocks that I'm investing in. ठीक है सर, हमने काफ़ी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले हफ्ते में उनको कवर किया है. अब देखना ये है कि आने वाले हफ्ते, आने वाले दिनों के अंदर जो पीसी अनाउंस होगा, वो किस तरह से मार्केट को अफ़ेक्ट करता है. फॉर द ऑडियंस, अगर आपने हमारा शो नहीं देखा, जो कि पैसा बोलता है के नाम से हमने अपने इसी चैनल के ऊपर लॉन्च किया है, जिसका हमें बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है. उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा. ज़रूर जाके देखें उसको हम यहाँ पर लिंक भी कर देंगे इसी वीडियो के अंदर. आपके टॉप राइट पर जो है वो उसका कार्ड आ रहा होगा. अगर आपने हमारे प्राइमर्स नहीं देखे, जिसके अंदर हम इसी तरह के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, आरएसआई क्या होता है, मार्केट शॉर्ट किस तरह से हो रही होती है, 3 तरह की ट्रेडिंग जो प्रोसेसेस होते हैं, या जो डे ट्रेडर्स होते हैं, या जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल चीज़ों को. अगर आपने वो स्पेसिफिकली अगर आप उन चीज़ों को जाके देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने आपके लिए हर 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 कस्टमर के लिए हमने जो है ना कुछ रखा हुआ है, तो आप वो भी हमारा शो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर मौजूद है. इन द एंड, थैंक यू अशर भाई. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीकली रिकैप. वी विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एवरी टाइम. आपके फीडबैक के मुताबिक इसी तरह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम. For more insights, join our limited access Discord channel now.